ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਫਲੂਇਡ ਮੋਜ਼ੈਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਫਲੂਇਡ ਮੋਜ਼ੈਕ ਮਾਡਲ। This model was first proposed by S.J. Singer and Garth L. Nicholson. S.J. Singer and Garth L. Nicholson, G.L. Nicholson भी कर सकते हो, in 1972. In 1972. This model explains the structure of plasma membrane. This model explains the structure of plasma membrane. As a mosaic of components. Mosaic of components. कंपोनेंट्स लगे हाइफन पाके केड़े केड़े कंपोनेंट्स including phospholipids, cholesterol, protein, carbohydrates, that gives the membrane a fluid, that gives the membrane a fluid character. Fluid character. Next point, plasma membrane ranges from 5 to 10 nanometer in thickness. Nanometer in thickness. Full stop. Next लिखो, the proportion of the proteins, the proportion of the proteins, इहदे विच protein दी मात्रा कितनी है? The proportion of the proteins, comma lipids and carbohydrates the proportion of the proteins, lipids and carbohydrates vary, vary, vary with cell type. जिस तरह का सैल होएगा उस तरह की मात्रा उहदे च वध घट जिहड़ी हो सकती है। हुण मसल सैल्स दे विच फैट की मात्रा ज़्यादा होएगी, जबकि जिहड़े ग्रोइंग सैल्स होणगे जिवें वाल हो गए या नाखून हो गए, इन्हां विच प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होएगी। सो इन्हां दी जिहड़ी वेरीबिलिटी है मात्रा की, कंपोजिशन की या प्रोपोर्शन की, वो जिहड़ी है वो डिफरेंट हुंदी रहिंदी है। सो नेक्स्ट हेडिंग पाओ, द कंपोनेंट एंड फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The component and the function of plasma membrane. First point is अंदर लिखो, the principal components of a plasma membrane. Principal component मतलब सब तो ज़्यादा main, द प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रिंसिपल द स्पेलिंग की लिखी है जी,
मैंने पहले पता सी। The principal components of a plasma membrane are lipids, proteins and carbohydrates. Lipids, proteins and carbohydrates attached to some of the lipids, and some of the proteins. Next point, the main fabric of the membrane is composed of amphiphilic, AMPHI, PHILIC, AMPHI, PHILIC, amphiphilic और नहीं amphiphilic phospholipid molecules, और नहीं लिखना बेटा, amphiphilic phospholipid molecules. Already phospholipid spelling is on the board. Phospholipid molecules, full stop. Next point, the hydrophilic or water loving areas, बड़ी simple language है फिर भी कल ना लो. The hydrophilic or water loving areas of these molecules, are in contact with the aqueous fluid both inside and outside of the cell. जिथे भी फ्लूइड नाल लगेगा सैल दे उधरले पासे ओदी हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी दी लविंग वाली लेयर जिहड़ी है उस पासे वाल होएगी, और जिथे पानी नहीं लग रहा, जिथे एक्वस सोल्यूशन नहीं है सैल दी साइड ते, उत्थे हाइड्रोफोबिक लेयर जिहड़ी है वो होएगी. ठीक है, उन्हें पानी नू रिपेल करना है, इन्हें पानी नू अपने वाल खिंचना है. ठीक है, सो both inside and outside of the cell, full stop. Next point, hydrophobic or water hydrophobic, hydrophobic or water hating molecules tend to be non-polar. ये कोशिश करते हैं कि नॉन पोलर ही रहने, यानी कि पानी वाले पासे ना जान. टेंड, TEND, टेंड टू बी नॉन पोलर. नेक्स्ट पॉइंट, अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, हुण एक मॉलिक्यूल चुकते आओ तो असी कहने हैं कि पूरी की पूरी लेयर जी फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है. ठीक है, वो जो एक मॉलिक्यूल चुकया तो उन्होंने स्टडी किया, पता लगा भी एक काहदा बनया हुआ है, ये किन्ने पार्टिकल्स काहदे लगे ते किन्ने पार्टिकल्स काहदे लगे. So a phospholipid molecule consists of 3 carbon glycerol, backbone with 2 fatty acids, molecules, attached to carbon 1 and 2. And a phosphate containing
phosphate containing group attached to the third carbon. Phosphate containing group attached to the third carbon. This arrangement gives the overall molecule an area. Full stop. Next point लिखो. The hydrophilic region of the phospholipids. The hydrophilic regions of the phospholipids tends to form hydrogen bond. The hydrophilic region of the phospholipids tend to form hydrogen bonds with water and other polar molecules on both the exterior and interior of the cell. The hydrophilic region of the phospholipids tend to form hydrogen bonds with water and other polar molecules on both the exterior and interior of the cell. Next point, in contrast, the middle of the cell membrane is hydrophobic. In contrast, the middle of the cell membrane is hydrophobic and will not interact with water. Interact to the water. Therefore, phospholipids form an excellent lipid bilayer cell membrane that separates. Continue. Therefore, phospholipid form an excellent lipid bilayer cell membrane that separates fluid within the cell from the fluid outside of the cell. Next point, protein make up the second major component. Of plasma membrane. Full stop लगा लिया. Protein make up the second major component of the plasma membrane. Full stop. Next point लिखो, integral proteins. यानी कि जो प्रोटीन होता which यूज हुआ है, that is called integral proteins, are integrated, which mix है, are integrated completely into the membrane structures
completely into the integrated completely into the membrane structure full stop. Second, next point लिखो, single pass integral membrane, single pass integral membrane protein usually have a hydrophobic transmembrane segment, usually have a hydrophobic transmembrane segment that consist of 20 to 25 amino acids, that consist of 20 to 25 amino acids. This arrangement of regions of the protein, next point लिख लो चाहे, this arrangement of regions of the protein tends to orient मतलब घुमाते रहना, ठीक है, orient the protein alongside the phospholipids, with the hydrophobic regions of the protein adjacent to the tails of the phospholipids, full stop. These are the two components ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜਾ थर्ड component ਉਹ carbohydrates है, ਉਹ ਅਸੀਂ next lecture ਚ ਕਰਾਂਗੇ। that is enough for today.